Good morning, students. So in our previous video, we discussed about the physical properties of metals and non-metals. Now the leftover portion of our chapter is here. Next is our chemical properties of metals and non-metals. How do metals and non-metals react chemically? And with which substances it react? किस किस के साथ metals या non-metals किस तरीके से chemically react करता है? Okay. So first one is our reaction with oxygen. Reaction with oxygen, O2. Metals also react with oxygen and non-metals also react with oxygen. Okay. Generally metals जो oxygen और moisture के साथ react करके corrode हो जाते हैं, उस process को क्या बोलते हैं? Corrosion. Clear? अब metals react करती हैं, metals react with oxygen gas. Metals are generally solid, na? So state I am also writing here. React with oxygen gas and forming metal oxides. So metals react with oxygen gas and they form metal oxides. Okay, and these metal oxides are basic in nature. This is the chemical property of metals. All the not all, means nearly, generally metals react with oxygen and they form metal oxides which are basic in nature. Okay, and how we can find out the basic nature of these products which are formed here? We can use any litmus paper, litmus test we can do here. Okay, we will take a red litmus, and if that red litmus paper will turn into blue, then it is confirm here that our metal oxides are basic in nature. Understand? For example, let us take some examples also of these reactions. For example, sodium. सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, है ना? इट इज सॉफ्ट ऑल्सो, इतनी हार्ड नहीं होती, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में किया था, बट इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. And this sodium oxide is basic in nature. Okay, I have multiplied sodium with 4 and here 2 I used for balancing of the chemical reaction. वो आपके 10th class में आएगा. You are not going to study that in your 8th class. Okay, so sodium oxide बनता है and this sodium oxide is our basic in nature. Let us take another example also. Iron react with oxygen and form Fe2O3, that is our rust. Clear? To balance it we can multiply it with 3 and 2 Fe2O3. So iron react with oxygen and form iron oxide. Okay, and this iron oxide, rust, जंग जो लगता है आयरन की ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ये जो रस्ट है बेटा, दैट रस्ट अगर हम इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर एंड इफ वी विल चेक द एसिडिटी और बेसिसिटी विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, तो इसमें क्या होगा? रेड लिटमस विल टर्न इनटू ब्लू. सो इट मींस द रस्ट इज बेसिक इन नेचर, है ना? So all the metals react with metals react with oxygen and form metal oxides, and these metal oxides are basic in nature. But non-metals do not form basic oxides. Okay, non-metals का क्या? What is the property of non-metals? Non-metals react with oxygen and they also form oxides. कोई भी substance, if any element is reacting with oxygen, it is forming oxide only. Okay, so non-metal oxides will be formed. But what is the difference? कि non-metal oxides will not be basic in nature. Actually beta, non-metal oxides are acidic in nature.
these oxides, when we make solution of these oxides beta, then these will turn blue litmus into रेड कलर. इट मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर. तो जितने भी नॉन मेटल्स है वो ऑक्साइड फॉर्म करेंगे एसिडिक नेचर के, एंड ऑल द मेटेलिक ऑक्साइड्स विल फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ बेसिक नेचर. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन. First was reaction with oxygen. Next is our reaction with water, H2O. Clear? First we will take the case of metals and then non-metals. Now metals react with water and they will form metal hydroxide. Again these metal hydroxide will be of basic nature. जितने भी metal hydroxide form होंगे when the metal react with water, then these will be of basic nature. They will turn red litmus to blue litmus. Okay. For example, let us take sodium plus H2O with water. Sodium is highly reactive ना, बर्न भी करने लगता है जब हम पानी में डालते हैं सोडियम को. So it will form NaOH, sodium hydroxide. Clear? And this NaOH, sodium hydroxide, is basic. We know that because sodium hydroxide is a very strong base na. Okay. Now next is non-metals. How do non-metals react with water? Generally non-metals do not react with water beta. वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली नॉन मेटल्स नॉर्मल सिचुएशन में. क्लियर? और एक नॉन मेटल, देयर इज अ नॉन मेटल फॉस्फोरस, दैट इज हाईली रिएक्टिव, लेकिन फॉस्फोरस भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है. इसीलिए फॉस्फोरस ऑक्सीजन में एयर में रिएक्ट कर जाता है, वाइग्रसली बर्न होने लगता है. दैट्स व्हाई फॉस्फोरस इज जनरली स्टोर्ड इन वाटर. फॉस्फोरस को तो स्टोर ही वाटर में करते हैं. ओके. सो नॉन मेटल्स डू नॉट गिव एनी रिएक्शन विद वाटर इन जनरल स्टेट. अंडरस्टैंड? क्लियर? नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट इज आवर third one, reaction with acids. Okay, reaction with acids. Metals generally react with an acid in different conditions. Some metals react with dilute acids, some metals react with concentrated acids, and some metals beta react with the metals in general state only. Okay. And form salt plus hydrogen gas. And this hydrogen gas will be released out of that apparatus in which the reaction is taking place. Okay. For example, Zn, zinc, is a metal solid in state, plus it will react with dilute hydrochloric acid and form ZnCl2, zinc chloride, that is a salt. Okay. And hydrogen gas will also be released out of it. How we can find out the release of hydrogen gas? बेटा हम एक burning matchstick लेके आएंगे, उससे टेस्ट ट्यूब के ऊपर, माउथ के ऊपर. Here is our reaction taking place. Okay. Here is our zinc. Okay. When this reaction will take place, then hydrogen gas will come out, and अगर हम एक burning matchstick लेके आते हैं, then there will be burning of hydrogen gas take place, क्योंकि hydrogen gas क्या flame that combustible gas है. Okay. And there will be pop sound coming out. Pop sound will come out और hमें sparks से दिखाई देंगे when the hydrogen gas will burn. Okay. So metals react with acid to form salts, and hydrogen gas released out of that chemical
composition in which we are doing the reaction. Okay, now after that, non-metals. Non-metals generally do not react with dilute acids. डाइल्यूट एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं. क्लियर? आफ्टर दैट, रिएक्शन विद बेसिस. फोर्थ वन आर आवर रिएक्शन विद बेसिस. अगेन मेटल्स react with base and they form salt plus hydrogen gas will be released out of that. Okay, hydrogen gas will be released and a salt will be formed. Clear? For example, sodium plus, not sodium because we are taking the base, sodium hydroxide, NaOH. Sodium hydroxide is a base that will react with zinc, a metal, and a salt will be formed, that is our ZnNA2O. Sodium zincate plus hydrogen gas will be released out of it. Clear? So this salt will be formed and hydrogen gas will be released when any metal will react with a base. Clear? Now non-metals. नॉन मेटल्स की रिएक्शन दैट इज नॉट प्रेजेंट इन आवर सिलेबस, वो हायर क्लासेस में आएगा. बहुत डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस शो करते हैं नॉन मेटल्स विद bases. Okay, now after that one more topic is given in your syllabus, displacement reaction. Displacement reaction. What is displacement reaction बेटा? जब हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ हाईली रिएक्टिव मेटल वी आर टेकिंग, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, ओके, एंड वी आर टेकिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल सोल्ट. अगर उसके साथ वो रिएक्ट करेगा, देन सोडियम विल रिप्लेस दैट metal from that salt and it will form the salt itself. सोडियम का salt बन जाएगा and the metal will be left out from that salt. Okay, जब ऐसी कोई रिएक्शन हो जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके salt से displace करे, that reaction is called displacement reaction. Understand? For example, iron and copper sulfate. Iron is more reactive than copper sulfate. So iron will displace the copper from SO4. CuSO4. So iron will displace the copper from its salt and it will form FeSO4, iron sulfate. And copper will deposit on that iron piece which we are putting in our solution. Okay, जैसे अगर हम किसी copper sulfate के solution में, actually it is blue color. We are taking a beaker and copper sulfate is present in it. Copper sulfate का solution बना है, ये copper sulfate blue color का होता है. Okay, and then we are putting iron nail in it. ये हमने iron nail put कर दी इसके अंदर. Then after some time what will happen बेटा? This iron will come out of this nail and iron के particles will displace copper from here. यहाँ से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे एंड दे विल फॉर्म आयरन सल्फेट. तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसके अंदर कलर चेंजमेंट हो जाएगी. इट विल बिकम लिटिल बिट ग्रीनिश बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, बिकॉज आयरन सल्फेट इज ग्रीन इन कलर. ओके, एंड देन वेयर विल द कॉपर गो? कॉपर विल डिपोजिट ऑन दिस नेल. यहाँ पे इस
नेल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा. ओके, डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस ना, सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. And these are all this is all about the chemical reaction of metals and non-metals, and our chapter is done. Thank you.